Hello students, in this video we are solving exercise 1.2 from your NCERT book. So this exercise is based on proof by contradiction. So students, what is this proof by contradiction? It is just like your detective cases, right? In detective cases, what happens that you assume that okay, this person is a criminal, right? This person has done some crime and you have many suspects. Okay, there is a prime suspect also, but at the end what comes out to be that that person has not done anything, there is someone who has done that crime. Okay, so means you assume that that person has done some crime, but at the end वो उसने नहीं किया होता है, right? So ऐसे ही यहाँ पे हम करेंगे क्या कि we assume, जैसे क्वेश्चन है ना प्रूव दैट रूट टू इज़ इरेशनल, तो हम इसका ऑपोजिट एज्यूम करके चलेंगे कि भाई नहीं ये तो रैशनल है. वी विल से दैट रूट टू इज़ रैशनल एंड देन वी विल डिमॉन्स्ट्रेट इट एंड वी विल कम टू अ कॉन्ट्राडिक्शन. मीन्स हम एक पॉइंट पे आ जाएंगे कि हमारा जो एजम्पशन हमने लिया था कि रूट टू इज़ रैशनल वो गलत प्रूफ हो जाएगा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. उससे पहले देर इज़ वन मोर थ्योरम हेयर 1.3 which says that let p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer. Okay, so एक कोई भी प्राइम नंबर ले लेते हैं हम, लेट्स से 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर. यस स्टूडेंट्स, 2 16 को डिवाइड करता है, राइट? सो कैन आई से दैट 2 डिवाइड्स 4 ऑल्सो, 2 डिवाइड्स 4 ऑल्सो. So means 2 is a factor of 4 also, 2 is a factor of 16 also, right? So this is what the theorem is there. This we are going to use in these type of question, prove that root 2 is irrational, root 3 is irrational, something like that. Okay, so root 2 is irrational, I am not proving, you people can do it on your own. I'll take these questions which are there in exercise and with that steps, same steps, follow that and do root 2 wala part B. Okay, now let's begin with the first question that prove रूट 3 इज़ इरेशनल. सो वील फॉलो द सेम थिंग व्हाट आई सेड कि हम एज्यूम करेंगे कि रूट 3 इरेशनल नहीं रैशनल है. ओके, सो लेट्स बिगिन. लेट रूट 3 बी अ रैशनल नंबर. हम इसको रैशनल लेके चलते हैं. ओके, और रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑल रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, राइट? सो वही लेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी ले लेती हूँ मैं यहाँ पे. रूट 3 कैन बी रिटन एज ए बाई बी वेयर A and B are co-prime. Co-prime numbers वो होते हैं जिनका सिर्फ one as common factor. Okay, so I have assumed that A and B are co-prime numbers whose common factor is only 1. Okay, please remember that they are co-prime numbers and B cannot be 0. Denominator 0 नहीं होना चाहिए, right? Okay, now square both the sides. दोनों sides को हम क्या करेंगे? Square. When I square both the sides, root 3 का square will become 3. A square by B square. Transposition कीजिए. You make it here. So B square, 3 into B square is A square. अभी now 3 into B square is A square. इसका meaning है कि 3 जो है it divides A square, right? 3 is a factor of, because 3 into something is A square, so 3 A का factor है, A square का factor है. So therefore 3 is also a factor or 3 divides A also. I'll use that theorem. 3 divides A also, right? Now let A equals to 3C. Why I am doing it? अभी मेरे को पता चल गया कि 3 जो है A का factor है. If I make 3 also a factor of B, then let's see what will happen. Okay, so A को I assume that A is equals to 3C. So put it back over here. इसको substitute करेंगे यहाँ पे. So you will get 3B square is A square will become 3C square. So that is 3B square is 9C square, which we can write as how? This can be written as B square is, you bring 3 here, so it will be 9 by 3, so 3C square. Okay, now from here let's move over here. What do you get? इसका मीनिंग क्या आया कि दैट 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर. यहाँ से पता चल रहा है 3 इंटू सी स्क्वायर इज बी स्क्वायर. सो मतलब 3 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं. 3 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर. ओके, सो देयरफॉर 3 डिवाइड्स बी ऑल्सो. नाउ 3 is a number that is dividing both A also and B also. So what does this mean? This implies 3 is a factor of both A and B. But what we assumed, इनका तो कोई और कॉमन फैक्टर था ही नहीं 1 के अलावा. they were co-prime numbers. Yeah, this
leads to contradiction, right? This leads to contradiction na, because we assumed that a and b are co-prime numbers. हमने तो assume किया था कि ये भी co-prime numbers थे. So therefore our assumption was wrong. हमारा जो assumption था वो तो wrong हो गया. Hence we will say that root 3 is an irrational number. So, okay ना, this leads to contradiction because यहाँ तो 3 common factor आ गया both a and b का, but we assume that they were co-prime numbers, so our assumption was wrong. Hence root 3 is an irrational number. I hope this is clear, students. You have to follow it properly and do this thing, right? So assuming this as rational, a by b, all that writing part, it all counts here. It has step by step marks. Okay students, now let's move to next question. Root 5 वाला part पे आते हैं. Exactly same we'll do. Let me change colors for all the steps that I follow here. Okay, so first step क्या होता है इसमें? First step we say that let root 3 be a rational number. Okay, sorry, not root 3, here it is root 5, and root 5 is in the form of a by b, where a and b are co-prime numbers. Okay, co-prime numbers or co-prime integers, you can say better, co-prime integers, and b cannot be 0, right? Then we do square both sides. Okay, after squaring both sides, let me change the color over here. What do we get? We get 5 equals to a square by b square, or you can say 5b square is a square, right? From here what do you get? 5 divides a square, therefore 5 divides a. Now let a equals to what? A equals to what? I'll say 5c. Okay, इसके बाद let me change again the color. When a is 5c, so what you will get? 5b square equals to, instead of a you put in this 1 5c, so it will become 5c whole square. So 5b square equals to 25c square. तो b square क्या आ जाएगा? 5 you bring here, do transpositioning, 25 by 5 is 5c square. Okay, यहाँ तक आ गया, step clear है. Now from here what you will get? That 5 divides, किसको divide कर रहा है अभी? 5 b square को. Okay, so I'll move over here. So I'll say that 5 divides b square and 5 divides b, right? Now comes the contradiction part. क्या हो गया अब यहाँ पे? Now 5 is a common factor of a and b, right? So this leads to contradiction. ये नहीं भी लिखो तो चलेगा, that our assumption was wrong, सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो. So our assumption was wrong, right? Fine. So as we assumed that a and b are co-prime, ठीक है, so हम लिखेंगे our assumption was wrong, hence root 5 is an irrational number. I hope this is clear students. Okay, so यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आया. व्हाट आई हैव डन इन दिस केस, जो हम नेक्स्ट बार एज्यूम करते हैं कि a इक्वल्स टू प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव डन a इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे हमने लिया था a इक्वल्स टू 3c, राइट? इधर हम ले रहे हैं क्या? a इक्वल्स टू 5c. सो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ दिस रूट इनसाइड वी आर चेंजिंग दिस, या a इक्वल्स टू 5c. अगर रूट 7 हो जाएगा तो a इक्वल्स टू 7c. इफ इट्स रूट 2 तो a इक्वल्स टू 2c, right? In this way you have to do. So now let's move to next question. ये थोड़े easy हो जाते हैं students क्वेश्चन. यहाँ पे इन क्वेश्चंस में जनरली हमको given होता है that let me write what is given. It is always given that root 5 is irrational. नहीं given होता है by chance in exam, तब आपको क्या करना होगा? root 5 को irrational पहले prove करना होगा previous step से. Okay, that is important over there. Yeah.
जनरली ये 2 मार्क में आ जाता है, तो वहाँ पे आपको गिवन होता है कि रूट 5 इज़ इरेशनल. ओके, सो लेट्स डू वेरी इजी. सेम स्टेप वी विल फॉलो. लेट 3 + 2 रूट 5 इज़ अ rational number. This whole exercise is based on proof by contradiction only, right? And again 3 plus root 5 is written in the form of a by b, where a and b are co-prime integers and b cannot be 0, right? यहाँ से अभी सिंप्लीफाई हमको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इज़ रूट 5 को वी विल कीप ऑन वन साइड. जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना होगा, रूट 5 ऑन वन साइड, रेस्ट ऑल नंबर्स, ये 3, 2 जितने भी नंबर्स हैं सबको यू हैव टू मूव ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, राइट? समझ गए बच्चों? सो यहाँ पे रूट 5 को आई कीप हेयर, पहले आई टेक 3 ओवर देयर, सो a by b minus 3, 2 अभी आई कीप इट हेयर ओनली. सो 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू, ये सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लोगे तो a minus 3b by b. नाउ ब्रिंग 2 हेयर, सो रूट 5 आ गया क्या, a minus 3b by 2b. ओके, नाउ a b आर इंटीजर्स, तो व्हाट डज दिस बिकम, ये क्या बन गया आपका, नाउ दिस हैज़ बिकम व्हाट, नाउ a minus 3b by 2b इज़ अ रैशनल नंबर, राइट? क्या है ये रैशनल नंबर? सो देयरफॉर if this is rational, so therefore root 5 is also rational, right? root 5 भी rational बन गया ना, क्योंकि root 5 is equals to something rational, so root 5 has also become rational. but root 5 is given as irrational number, it is given, right? so hence our assumption was wrong, हमारी जो assumption थी वो wrong हो गई, correct? our assumption was wrong, so therefore क्या है, 3 + 2 रूट 5 आपका जो नंबर है इज़ एन irrational number. आई होप दिस इज़ क्लियर स्टूडेंट्स. वेरी सिंपल स्टेप्स, आपको सिर्फ ट्रांसपोजिशनिंग करना है, ट्रांसपोजिशनिंग, एंड यू हैव टू मूव ऑल नंबर्स अदर देन द रूट नंबर to other side of the equation and make that as a rational number and done. Okay, now let's move to the next part. Next question, prove that the following are irrational. Same way we will follow it, exactly the same. so यहाँ पे भी आपको पता है कि root 2 is irrational, right? start करते हैं. you have to prove, so not given, so let, नहीं 1 by लेना पड़ेगा, राइट? ओके, 1 by रूट 2 इज़ रैशनल नंबर, ओके, एंड 1 by रूट 2 इज़ अगेन a by b, वेयर a and b आर co-prime integers and b not equals to 0. okay, so from here what do you get, इसको रूट 2, you don't have to square over here, so यहाँ से रूट 2 आ जाएगा क्या, b by a, right? you take रूट 2 here, so b by a, so therefore b by a is a rational number, right? we assumed it, a by b है तो b by a भी also rational number हो गया, correct? so therefore रूट 2 is also rational. रूट 2 भी रैशनल हो गया ना, क्योंकि ये रूट 2 एक रैशनल नंबर के इक्वल है तो रैशनल हो गया, करेक्ट? बट root 2 is given as irrational. root 2 हमें क्या given है, irrational, right? so our assumption is wrong, hence 1 by root 2 is an irrational number. now here if it is not given that root 2 is irrational, ये तो एक थ्योरम है आपका, तो you can assume it. if it is not given it is irrational, then you have to prove that step, okay, full step, what we did with root 3 and root 5. okay, now let's move to this question, 7 root 5. so we know root 5 is irrational, correct? so again I'll write over here, given root 5 is irrational,
सो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना. सो सेम वे लेट 7√5 इज़ अ रैशनल नंबर. आई होप अब तक स्टेप्स याद हो गए होंगे हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट. सो and 7√5 is of the form of a by b, where a and b are co-prime integers and b is not equals to 0. Okay, so just bring this number 7 down. So this is, so a by 7b is a rational number, correct. So therefore √5 is also a रैशनल नंबर. सो आप कुछ भी लिख सकते हो. हेयर कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज. देर आर डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग, बट आपका इंग्लिश जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है. फाइन. हेयर देर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज एज इट इज गिवन दैट √5 इज irrational. Okay. So therefore our assumption is wrong. Hence 7√5 is an irrational number. So students, आप देख रहे होगे कि कितने easy questions है, right? Very simple questions. You just have to follow few steps. ये last question और हम ख़त्म करते हैं जल्दी से. From this exercise, let me take it. Again √2 is given to you as irrational. So आपको same way step करना है. Let 6 plus √2 is a rational number. And 6 plus √2 is of the form of a by b, where a and b are co-prime integers and b is not equals to 0. Okay. √2 6 को उस साइड लेके जाओगे. a बाई बी -6. डोंट लीव इट लाइक दिस. इतना मत करना, बस इसको प्रॉपर थोड़ा सा सॉल्व कर देना. a -6b बाई बी, ये एलसीएम लेके आता है, इसको 1 बनाओ एंड यू मेक इट b ऑल्सो. तो ऊपर भी b से मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी b से मल्टीप्लाई होगा. यू जस्ट हैव टू मेक देम लाइक फ्रैक्शंस. ओके फाइन. नाउ दिस इज रैशनल. या सो a -6b बाई b इज अ रैशनल नंबर. Therefore √2 is also rational. But this contradicts the given fact. So there are different ways of writing. You see, I've written different in that here. So अब मैंने बोला आपका English correct होना चाहिए. You have to, you can frame your sentence in any way. But this contradicts the given fact that √2 is irrational. So therefore का सिंबल यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल वर्ड. therefore our assumption was wrong. Hence 6 plus √2 is an irrational number. Done with the exercise, students. So I hope this is clear, all the concept what we have done. Okay, so please revise it properly and go through the whole video. Keep on practicing. Now we'll come up with the next chapter video.